Good morning, student. Today we will start first chapter of physics, light, reflections and refractions. In this lecture, I will teach light and properties of light and reflections. Everyone know what is light? Light is a form of a energy which can help to see object clearly. Generally beta, light is a electromagnetic waves. Light is generally electromagnetic waves. It is a combination of electric wave and magnetic waves. When, let's take example, when light coming from torch fall on any object, this object reflected the light. This reflected light enter our eyes. You can see this object clearly. बेटा जब भी के लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट में पड़ती है ना, फर्स्ट दिस ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड द लाइट. दिस रिफ्लेक्टेड लाइट एंटर आवर आइज. You can see object clearly. With the help of a reflections, you can see any object in the world around us with the help of light. Generally, reflections phenomena take place in our daily life. You can see any object clearly. Next, we will talk about properties of light. I am already tell. Light is generally first property, light is generally electromagnetic waves. Second property, light is always travel in straight line. Third, the speed of light in air is 3 into 10 raised power 8 meter per second. Light does not require any medium for traveling. जैसे बेटा साउंड को मीडियम चाहिए ना ट्रैवल करने के लिए, बट लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल. दे मूव एनीवेयर. Everyone now common phenomena. These common phenomena you can observe daily lives: shadow formations, twinkling of star, formations of rainbows. All these phenomena based on light. Clear, student? Next, we will talk about reflections. I am already talk about what is reflection. With the help of reflection, you can see object clearly. First, let's talk about laws of reflections of light. Suppose I will take a plane mirror. I talk about later what is plane mirror. I will take a plane mirror. When light is incident on the surface of a plane mirror, this surface is polished, highly polished. Then they reflected the light. बेटा जो भी लाइट सरफेस में पड़ रही है उसे हमने नेम दे दिया इंसिडेंट रे. जो रेज रिफ्लेक्टेड हो रही है उसे हमने नेम दे दिया बेटा रिफ्लेक्टेड रेज. दीज इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड आर इक्वली डिस्टेंस. रिफ्लेक्टेड equal angle they get reflected. These rays are called normal ray. The angle between incident and normal ray, it is called angle of incident. The angle between normal and reflected ray is called angle of refractions. बेटा जो भी हमारा laws of reflections का फर्स्ट लॉ है ना बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस.
क्लियर है बेटा, जितना एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट रे का होगा उतना ही एंगल हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे का होगा। सेकंड, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रेज लाइज ऑन सेम प्लेन। सेम प्लेन मीन्स बेटा अगर आपका प्लेन्स रफ सरफेस होगा ना, दीज रिफ्लेक्टेड रेज मूव एनीवेयर then does not reflected equally, that's why surface should be highly polished surface, that's why equal reflections take place at every point. Clear है? first angle of reflections, angle of incident equal to angle of refractions. Second, they lies on same plane. कौन सी रेज बेटा सेम प्लेन में लाई करनी चाहिए? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज लाइज ऑन ए सेम प्लेन। क्लियर है बेटा यहां तक? बेटा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस, reflections have two types, regular reflections और diffuse reflections. I already tells if surface, अगर आपका बेटा surface polish है, highly polish है, then reflections are equally distance. अगर आपका बेटा surface rough surface है, then reflections, ray of light move anywhere, that ray of light move anywhere, it is called diffuse reflections. If reflections at a equal interval of, देन दैट इज कॉल्ड रेगुलर। अगर बेटा रिफ्लेक्शन मिरर में इक्वल डिस्टेंस में हो रही है, हम उसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शंस। इफ डिस्टेंस आर नॉट इक्वल, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस। क्लियर?